Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh and today we are going to do RBI's exposure norms. पहली बात तो exposure norms होते क्या हैं and why it is important for your exam. Students, मान लीजिए एक बैंक के पास 1000 crores हैं. If a bank is having 1000 crore rupees, 10,000 crore rupees हैं किसी भी बैंक के पास deposit पड़ा है customers का, right? And let's say what this bank is doing is a bank is giving loan to, let's say, one person, Anil Dhirubhai Ambani Group, ADAG group को, या let's say Anil Dhirubhai Ambani को इन्होंने they gave 8,000 crore rupees, 80% पैसा दे दिया. And in case of bankruptcy of this Ambani group का bankruptcy हो जाता है, what would happen to the depositors' money? So that's an issue. That is why RBI has put caps. लिमिट्स है कि आप एक पर्सन को, एक एंटिटी को मैक्स टू मैक्स कितना पैसा दे सकते हो जो भी डिपॉजिट पड़े हैं एक पर्सन को, या उसी की ही ग्रुप ऑफ एंटिटीज को मैक्सिमम कितना पैसा आप दे सकते हैं एज अ बैंक. एंड दैट्स व्हाट एक्सपोजर नॉर्म्स आर. लेट्स स्टार्ट द सेशन. This class is part of PNB SO Credit Officer 2025 exam. In which we are providing the complete syllabus coverage. पूरे syllabus का coverage हम करवा रहे हैं. Link is available in the description. आप एक बार please जाकर check कर लीजिए. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts and we are going to answer your doubts. Okay. Introduction to the exposure norms. As I have told you, the RBI prescribes the exposure norms to regulate the amount of credit risk that a bank can assume on a single borrower. एक सिंगल बोरोवर पे मैक्स टू मैक्स कितना क्रेडिट रिस्क जो है एक बैंक ले सकता है टू अवॉइड ओवर कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क. ओवर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, एक ही पर्सन पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं है. ऐसा ना हो कि आपके बैंक के पास 10,000 करोड़ थे और आपने एक ही पर्सन को 8,000 करोड़ दे दिए, 7,000 करोड़ दे दिए और वो पर्सन अभी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे? इन गाइडलाइंस की वजह से डाइवर्सिफिकेशन होती है, फाइनेंशियली साउंडनेस आती है बैंक में, राइट? और ये अलाइन करता है बेसल 3 नॉर्म्स के साथ, राइट? बैंक को बेसल 3 नॉर्म्स के साथ एक अलाइन करता है. दो तरह के एक्सपोजर होते हैं, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, राइट? फंड बेस्ड एक्सपोजर में आपका टर्म लोन आ गया. आई मीन यू आर एक्चुअली गिविंग द मनी. सीसी हो गई, टर्म लोन हो गया, कोई लोन एडवांस है, राइट? इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व है. नॉन फंड बेस्ड मतलब यू गेव अ गारंटी दी है, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है, डेरिवेटिव एक्सपोजर है, कोई कमिटमेंट है फ्यूचर की. While calculating this exposure, we are considering both fund-based and non-fund-based exposures. हम दोनों fund-based और non-fund-based को जो है aggregate ही इनका इसको हम consider कर रहे हैं, right? Capital base for the calculation exposure limits are calculated as a percentage of eligible capital base. किसका एक जो कैप है वो किस पे है? कैपिटल बेस पे है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल बेस वी आर कंसिडरिंग टीयर 1 कैपिटल. हम टीयर 1 कैपिटल को ही कंसिडर कर रहे हैं. टीयर 1 कैपिटल में कॉमन इक्विटी आती है और रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं. बैंक की कॉमन इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग, यही आपका कैपिटल है. टीयर 1 कैपिटल को ही हम कैपिटल बेस मानकर चलते हैं. व्हाट आर द कैप्स? लिमिट कितना है? सिंगल काउंटर पार्टी. You are a single counterparty. I am a single counterparty. Airtel as a company is a single counterparty. लेकिन अगर उसके अलग अलग companies है उस group के अंदर, that is a group of counterparties, right? So a bank's exposure to a single counterparty cannot exceed 20% of its eligible capital base. 20% का cap है यहाँ पे for the single counterparty. But infrastructure projects के लिए अगर borrower infrastructure से related है, then it can be 25% for infrastructure lending. infrastructure lending के लिए 25% है, लेकिन बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होगी. ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज इन दैट केस 25% तक अलाउड है. कनेक्टेड काउंटर पार्टीज एक ही पर्सन है, एक ही मैनेजमेंट है, उसकी अलग अलग कंपनीज हैं, इन दैट केस 25% अलाउड है. ठीक है. एक्सपोजर टू एनबीएफसी. बैंक जो है वो लोन देते हैं कई बार एनबीएफसीज को. बैंक्स दे गिव मनी टू द एनबीएफसीज. बैंक दे लेंड मनी टू एनबीएफसीज. एचडीएफसी बैंक गिव्स लोन टू मुथूट फाइनेंस, राइट? दे गिव लोन टू मनप्पुरम फाइनेंस. what is the maximum cap on that? So there are certain caps on that. Exposure to a single NBFC is capped at 20% of bank's eligible capital base.
What is eligible capital base? Bank's tier 1 capital. And it can be extended to 25% if NBFC is primarily engaged in infrastructure financing. So if NBFC is primarily engaged in infrastructure lending, then the maximum cap is 25%. There are certain exemptions from exposure norms. Certain exposures are exempted if exposure is, if money is lent to the government or the state government, if money is lent to RBI, exposure is guaranteed by central or state governments, exposure is backed by 100% cash margin or bank deposit. So if the exposure is backed by 100% cash margin or bank deposit, exposure to PSU under specific strategic public policy initiative, collateral exposure with cash or government securities. तो ये सारे जो है ये exempted है. Okay. Moving forward, ये आपका टेबल है. प्लीज रिमेंबर दैट सिंगल बोरोवर का 20% लिमिट है. सिंगल बोरो इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो 25% है. ग्रुप ऑफ बोरोवर्स 25%, सिंगल एनबीएफसी 20%, एनबीएफसीज इंफ्रा 25%. लार्ज एक्सपोजर का जो डेफिनेशन है, इफ एनी लोन विच इज मोर देन 10% ऑफ बैंक्स कैपिटल बेस, तो वो 10% से ऊपर उसे लार्ज एक्सपोजर मानते हैं. प्लीज गिव इट अ लुक. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके. We'll do some questions now. Which of the following is a fund-based exposure under the RBI norms? So this question was asked in IBPS PO 2019 mains exam. So basic question है, bookish सा question है. Loan to a company is a fund-based exposure. Bank guarantee, letter of credit, derivative contract, all these are non-fund-based exposures. Maximum exposure of a bank can have to a single borrower under RBI norm is 20% of tier 1 capital. Please remember 20% of tier 1 capital or the capital base. इसको याद रखें, 20% है tier 1 capital का. ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता था tier 1 plus tier 2 capital, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एग्जाम में ऐसा आ सकता है. An exposure is termed as large exposure if it is 10% or more of tier 1 capital. Which of the following exposure is exempt from RBI's exposure limits? If exposure is 100%, it is backed by 100% cash margin, or it is exposure is given to the central or the state government, or exposure is given to the money is lent to the RBI. In that case, exposure limits, it is exempted, right? Exposures that are fully backed by cash margin, bank deposit, or central government guarantees are exempt from exposure limits. Which type of capital is used to calculate the exposure limit under RBI norms? Tier 1 capital. Tier 1 capital को ही capital base माना जाता है. Very important question. What is the maximum exposure limit for a group of connected counterparties? This question has been asked multiple times in the past. 25% का लिमिट है. There is a limit of 25%. Maximum exposure limit for group of connected counterparties is 25%. Okay. What is the extended exposure limit for a single NBFC primarily engaged in infrastructure lending? It is 25%. For a normal NBFC, it is 20%. But if an NBFC is primarily engaged in infrastructure lending, then the exposure limit is 25%. So I hope you like the today's session, students. ये बहुत ही important, short और important concept था. You can join the full course on BankExamsToday.com, in which we are providing the complete syllabus coverage along with the test series. Link to join the course is available in the description. This is our WhatsApp number. Ask your doubts and we are going to answer all your doubts. So list of our successful students in the past. All these students that took our courses in the past for PNB so credit officer as well. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams, and I'm really, really happy for them. And you can be one of them in the future. And yes, you will be one of them in the future. If there is any doubt in your mind, please ask your doubt and write us a review on Google Play. This is the Bank Exams Today mobile application available on Android. Give us 5 stars if you have time. Time है तो please हमें review कीजिए.
And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. I hope आपको ये short session अच्छा लगा होगा. If there is any doubt in your mind, please ask your doubt. Subscribe the channel and just write a comment if there is any doubt. My WhatsApp number is already provided. That's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.